Hello students, Jinali Shah welcomes you all on behalf of Saraswati International Academy. Today we will begin with the next part of the chapter Biomolecules. Students, in the previous video we have studied regarding the chemical composition of the living organisms. We have also studied regarding the elemental analysis, and from that we have concluded that the living organisms are composed of organic as well as the inorganic compound. Now students, a biomolecule, which is a carbon compound present in the living organism, we have seen that it is classified into two categories. One is a micromolecule, or you can say biomicromolecule, and another one is a macromolecule, or also called as the biomacromolecule, right? In the biomicromolecule, we have studied that there are the simple compounds like sugars, amino acids, nucleotides, nitrogenous bases. These are their examples. And in macromolecules, the examples are proteins, polysaccharides, nucleic acids, etc. So students, in present chapter, we will be studying regarding the macromolecules present in the living organism. But we know that macromolecules, they are formed of the simple units called as the monomers. So in your book, students, say for example, if we talk about proteins. So what are proteins? They are polymers of amino acids. So students, in your book, amino acids is explained at one place, then at certain place proteins का description दिया गया है, then at the another pages, or you can say at different pages, structure of the protein is explained. At what I mean to say is, in your book, the protein topic or any other biomolecule topic, it is given in an scattered manner. So what we will do, we will study the protein as a whole. आपकी बुक में जो भी प्रोटीन का टॉपिक्स है, we will combine it and study it together. So in present, not only regarding proteins, I mean to talk about all the macromolecules. Say for example, nucleic acids, polysaccharides, जो भी कुछ है आपकी बुक में, वो different टॉपिक्स scattered फॉर्म में दिए गए हैं. We will study them as a whole so that it will be easier for you to study it. So in today's lecture, we will be studying regarding the one of the most important macromolecule, that is the proteins. So let us start with our topic, proteins. Now, proteins are the polymers, right? They are the macromolecules. Macromolecules polymers होते हैं. Polymers ऐसे component है जो simple monomer से बनते हैं. So proteins के monomeric unit को क्या बोलते हैं? Amino acids. So amino acids, they are the building blocks of proteins. So who are the building blocks of protein? They are the amino acids. The amino acids are the organic compounds which contain an amino group and an acidic group as the substituent on the same carbon, that is the alpha carbon. Okay. अभी अमाइनो एसिड्स कैसे कंपाउंड है? अमाइनो एसिड ऐसे कंपाउंड है कि एक कार्बन पे देर इज द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक ग्रुप कॉल्ड एज द COH group, and this carbon only contains it also contains the another group that is called as the NH2 group or amino group. Are you getting my point? Amino acid, they are the organic compound which contains the amino group, and this is an amino group and this is an acidic group as the substituent on the same carbon. See, this is a one carbon, यही कार्बन पे एसिडिक ग्रुप भी है, यही कार्बन पे एमाइनो ग्रुप भी है. So that is amino group, and that carbon on which both are you can see here the presence of the amino group as well as the acidic group, and that carbon is called as an alpha carbon. So students, the term alpha carbon, what is alpha carbon? So alpha carbon is the carbon which is adjacent to carbonyl group. ये कार्बन है, राइट? अभी ये कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप है, that is acidic group है. This acidic group is represented by C double bond OH, right? ये acidic group है.
Listen very carefully. This is a carbon. ये कार्बन पे COOH group है. Now this COOH group basically is represented as C double bond O OH. So ये वाला जो group है, that is called as what? It is called as the carbonyl group. So student, this carbon is adjacent to the carbonyl group. ये वाला जो carbon है, that lies adjacent to what? It lies adjacent to carbonyl group. So this carbon is called as the alpha carbon. Are you getting my point, student? The carbon which lies adjacent to carbonyl group. What is carbonyl group? It is C double bond O. So the carbon which lies adjacent to carbonyl group is called as the alpha carbon. Clear? नाउ अल्फा कार्बन के एडजेसेंट जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड एज बीटा कार्बन, और यू कैन से द सेकंड कार्बन फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप is called as the beta carbon. Say for example, this is the carbonyl group, this is the one carbon, this is another carbon, say for example, and this is the another carbon. So this group is which group? Carbonyl group. ओके अभी कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन. नाउ कार्बोनिल ग्रुप से जो सेकंड कार्बन है दिस इज द फर्स्ट कार्बन. कार्बोनिल ग्रुप से जो फर्स्ट कार्बन है वो अल्फा ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप से जो सेकंड कार्बन है दैट इज कॉल्ड एज द बीटा ग्रुप. ओके एंड कार्बोनिल कार्बन से जो थर्ड कार्बन है that is called as the gamma carbon. Okay, so the position of the carbonyl group is very important. Carbonyl group के जो adjacent carbon है that is alpha, carbonyl group से जो second carbon है वो beta, and carbonyl group से जो third carbon है that is called as the gamma carbon. Clear? So the amino acids are organic compound containing amino group and acidic group as the substituents on the same carbon. That is the alpha carbon. It is the carbon adjacent to the carbonyl. The functional group C double bond O is called as the carbonyl. C double bond O group हो गया carbonyl. अभी इसके साथ OH हो गया, then it is called as carboxylic group. Alpha carbon are carbon adjacent to carbonyl group, beta carbon on the second carbon, and gamma carbon on the third carbon from the carbonyl group. Hence, they are called as alpha amino acids. Why are they called as alpha amino acids? Because amino group and acidic group, they are present on the alpha carbon. Both amino and the carboxylic group, they are present on the alpha carbon, and therefore they are also called as the alpha amino acids. Amino acids are substituted methane. Now we all know the formula for methane. Methane का formula क्या है? CH4, or you can say this is the structure of the methane, right? Now ये methane के 3 hydrogens they get substituted. They are attached to the other component. Instead of hydrogen they become attached to what? Say for example, listen very carefully. This is the structure of what? This is the structure of the methane, right? Now, what are alpha amino, substituted methane? Suppose for example, one hydrogen get replaced by COH group, other gets replaced by NH2 group, other get replaced by R group. R group is any functional group and other is as it is hydrogen. So ये क्या हुआ? मीथेन के 3 हाइड्रोजन क्या हो गए? सब्सटीट्यूट हो गए, रिप्लेस हो गए. किससे? 1 by COH group, 1 by NH2 group and 1 by R, which is any of the functional group. And hence they are called as what? They are called as the substituted methanes. Now see students, here you can clearly see the structure of the amino acid. Let me explain you.
They have a central 4 valency carbon atom to which are attached 4 substituent groups. Okay. So amino acid के structure में central position consist of the carbon. ये carbon की valency कितनी है? 4 है. And to this carbon 4 groups are attached. So which are these 4 groups attached to this central carbon atom? An amino group on one side, that is NH2 group. So here you can see this is a central carbon. ये कार्बन के एक साइड पे amino group है. Then carboxyl group, that is COOH, that is carboxylic acid group. It is attached on the other side. Now an hydrogen atom on the third side. So this is the hydrogen atom present on the third side. And a variable group symbolized by R on the fourth side. So this is a R group, side chain के जो कोई भी group हो सकता है. So students, this is a structure of the this is the structure of the amino acid. Here you can see the structure of the amino acid. This is a central carbon. This carbon is attached by the amino group on one side, carboxylic group on other side, R group hydrogen on the third side and R group on the fourth side. Now see students, this is the carbonyl group. ये वाला group कौन सा है? Carbonyl group. ये ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड होता है या ये कार्बन से जो एडजेसेंट कार्बन होता है, the carbon adjacent to the carbonyl group is called as what? It is called as the alpha carbon. So this is the general structure of the amino acid. What is it? It is the general structure of the amino acid. Now, when we talk about proteins, proteins are composed of 20 different kinds of amino acid. वो 20 different kinds amino acids के है, उसमें ये जो है amino group, hydrogen and carboxylic group, वो तो क्या होगा? सब में सेम होगा. Change क्या होता जाएगा? The R group keeps on changing. So, ये जो 20 वेराइटीज है अमाइनो एसिड की जो प्रोटीन्स बनाते हैं, वो डिफरेंस कहाँ पे रहता है? The difference lies in their R group. Are you getting my point? Here also you can clearly see the structure of the amino acid. This is a central carbon. One group is the COOH group. एक साइड पे NH2 group, एक पे हाइड्रोजन और एक पे R group. And this carbon is adjacent to the carbonyl group. And what is it called as? It is called as the alpha carbon. So this is the general structure of the amino acid. Now students, based on the nature of R group, there are many types of amino acids. Okay, अभी कोई भी amino acid में 3 structures तो common है. COH group, NH2 group and दूसरा कौन सा group? Hydrogen. These 3 are common. जो variations होता है वो किस में आता है? R group में. So, based on the nature of R group कौन सा है? On that basis, there are varieties of the amino acids. However, those which occur in proteins are of only 20 types and are called protein amino acids. अभी amino acids में जो different part है वो कौन सा है? R group है. Okay, अभी जब वो R group कुछ भी हो सकता है. So thousands of amino acids can be formed. But students, one thing to be kept in mind is जो amino acids protein बनाते हैं, only there are 20 such amino acids which are responsible for formation of proteins. amino acids की variety बहुत ज़्यादा है. Okay, R group can be any group. So there are you can say many types of the amino acids, but there are out of the many amino acids, there are only 20 amino acids which are used in the formation of the proteins. Out of the many kinds of the amino acids, only there are 20 such amino acids
which are used in the formation of the proteins, and those 20 amino acids are called as protein amino acids. What are they called as? They are called as the protein amino acids. The R group in this proteinaceous amino acid could be hydrogen. अभी R group कुछ भी हो सकता है. Say for example, see the structure of this amino acid. This is common to all. NH2, hydrogen, COOH. Okay. यहाँ पे एक R group कौन सा है? Hydrogen. In some cases the R group will be CH3. ये ऊपर के तीन तो सेम है. So that amino acid is alanine. किसी में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल मिथाइल. सी दिस इज द हाइड्रोक्सिल मिथाइल. सो दैट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज द सीरीन. सो आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर में कि जो डिफरेंस होता है वो किस में है? आर ग्रुप में. स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर्स. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज फॉर द बोर्ड्स ऑल्सो. ये भी याद रखना है कि ग्लाइसिन अगर एग्जाम्पल है तो उसमें आर ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोजन. एलेनाइन में व्हाट इज द आर ग्रुप? CH3, दैट इज मिथाइल ग्रुप. एंड सीरीन में क्या है? हाइड्रोक्सी मिथाइल, दैट इज CH2OH. These structures are very 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 important, students. Now students, we will study the different types of the amino acids. The chemical and physical properties of amino acids are essentially of the amino carboxyl and R functional group. Okay, अमाइनो एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द एमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एज वेल एज द आर ग्रुप. सो स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो एसिड में कितने एमाइनो ग्रुप है एंड कितने कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसके बेसिस पे देर आर 3 types of the amino acids. Listen very carefully. Based on the number of the amino and carboxyl group, amino acid में कितने amino and कितने carboxyl group है, उसके basis पे there are 3 categories of the amino acids. So first is the acidic amino acid. So what are acidic amino acids? Those amino acid which have 2 carboxyl group, यानी 2 COOH group है, okay, and 1 amino group, that is 1 NH2 group. Those amino acids are called as the acidic amino acids. The amino acids with the 2 carboxyl group and 1 amino group, it is called as the acidic amino acid. The example is the glutamic acid. Then the next one is the basic amino acids. Those which have 2 amino group. Amino group कितने हैं? 2. That is there are 2 NH2 group and 1 carboxyl, that is 1 COOH group. Then such amino acids are called as the basic amino acids. And finally the neutral amino acids. What are neutral amino acids? Those amino acids which have 1 amino group, right, 1 amino group and 1 carboxyl, यानी एक COOH group है and 1 NH2 group, then such amino acids are called as neutral amino acids. So based on the number of amino and carboxylic group, there are 3 types of the amino acids. First is acidic amino acids के जिसमें 2 COOH group and 1 NH2 group. Second one is basic amino acids which have 2 NH2 group and 1 COOH group. And lastly the neutral amino acids के जिसमें 1 amino group and 1 COOH group. The example of the acidic amino acid is glutamic. For the basic amino acid lysine and for the neutral it is valine. Similarly, there are aromatic amino acids like tyrosine, phenylalanine and tryptophan. Students,
एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एसिडिक की एग्जाम्पल दी गई है, बेसिक की दी गई है, न्यूट्रल की दी गई है एंड एरोमेटिक. सो एरोमेटिक जो अमाइनो एसिड्स है उनमें क्या होता है, जो आर ग्रुप है, that R group is an aromatic ring. So it consists of the benzene ring-like structure. So if the R group consists of the aromatic ring, okay, so they are called as the aromatic amino acids. What are aromatic amino acids? Those amino acids which have the aromatic ring in the side chain. Their examples are tyrosine, phenylalanine, tryptophan, etc. So this is the classification of the amino acids on the basis of the number of the amino groups and the carboxyl groups. See students, here we can see the example. This is a neutral amino acid, okay, only one COH and one NH2 group, right? Acidic amino acids, it have 2 COH group. आप देख सकते हो, it have how many COH group? 2. And how many amino group? 1. And lastly is the basic amino acid के जहाँ पे there are 2 NH2 group and only 1 COOH group. So such amino acids are called as the basic amino acids. Neutral में only one NH2 and one COH. Acidic में 2 COH and 1 amino. And basic में 2 amino and 1 COH. So these are the types of the amino acid on the basis of the number of carboxyl and the amino group. Now, another classification of the amino acids. So the amino acids may also be classified into 3 groups on the basis of charges. अभी amino acid के ऊपर charges है या नहीं है, on that basis again the amino acids are classified into 3 categories. Based on the charges, the amino acids are further categorized into 3 groups. So which are those 3 groups? Non-polar amino acids which have no charge. जो अमाइनो एसिड के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, they are called as the non-polar amino acid. Then another one is the polar uncharged. Polar uncharged यानी charges balance, making a molecule as a whole uncharged. क्या होता है? Charges होते हैं. Say for example, one positive charge and one negative charge. So charges are there, but due to equal charges, the whole molecule becomes uncharged. Say for example, एक ही positive charge है and एक ही negative है. So ये balance हो गया. So total molecule पे क्या charge रहेगा? No charge. Okay. So here charges are there, but they balance. So they are called as the polar uncharged amino acid. And finally, polar charged, which may be positively charged or it may be negatively charged. Polar charge यानी क्या कि charged molecule है, either positive charge होगा या negative charge होगा. If they are positively charged, then they are basic amino acids, and if they are negatively charged, then they are the acidic amino acids. If they are positively charged, they are basic amino acids. If they are negatively charged, they are acidic amino acids. See students, here you can see the charges on the amino acids. We will see that a particular property of amino acid is the ionizable nature of NH2 and COH group. So very important property of the amino acid is that कि उनका जो एसिडिक ग्रुप है दैट इज COH ग्रुप एंड उसका जो NH2 ग्रुप है दैट इज अमाइनो ग्रुप, ये कैसे ग्रुप से आयोनाइजेबल है, डिफरेंट pH कंडीशन में ये आयोनाइज हो गए. इन द डिफरेंट pH सॉल्यूशन द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड चेंजेस, यानी ये क्या हो जाते हैं, डिफरेंट आयंस बनाते हैं. सो इन डिफरेंट
in the solutions of different pH the structure of the amino acid changes. Say for example ये जो बीच वाला है, आप देख सकते हो कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है या इसको आयन बोलो, it have a separate negative charge as well as it is also having a positive charge. So basically it is having one positive charge and one negative charge. So ऐसे मॉलिक्यूल के जिसके पास दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो, it is called as the zwitterionic form. What is it called as? It is called as the zwitterionic form. What is zwitterion? It is a molecule or an ion which have a separate positive and negative charge. ये वाला जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है उसमें नेगेटिव आयन भी है एंड पॉजिटिव आयन भी है. So such ions or molecules which have separate positive and negative charges are called as what? They are called as the zwitterion. Now see students, ये वाला जो अमाइनो एसिड है हमने देखा कि अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इट इज़ अ बेसिक अमाइनो एसिड. सो बेसिक अमाइनो एसिड में क्या होगा, उसका NH2 ग्रुप क्या होगा, आयोनाइज होगा. What will happen? Its NH2 group gets ionized. So here it becomes what? NH3 plus. And जो नेगेटिव अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एसिडिक होते हैं उनमें जो आयोनाइजेबल ग्रुप है वो कौन सा है, COO माइनस. सो ये वाला कौन सा अमाइनो एसिड हुआ, एसिडिक अमाइनो एसिड. एंड ये वाला कौन सा हुआ, बेसिक अमाइनो एसिड. A molecule or ion having separate positively and negatively charged groups are called as the zwitterionic forms. अभी ये कैसे होता है, we will see that. All amino acids have amino group which is basic and carboxylic group COH which is acidic. कोई भी अमाइनो एसिड के पास दोनों ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप जो बेसिक है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक है. इन बेसिक कंडीशंस यानी कि अल्कलाइन पीएच में क्या होता है, जब कंडीशन बेसिक है तो COOH ग्रुप इट लूजेस H प्लस आयन टू बिकम COO माइनस. क्या होता है, बेसिक कंडीशन में COOH ग्रुप एट द अल्कलाइन और बेसिक पीएच the COOH group it loses the hydrogen atom and it becomes what, COO minus. By donating a proton an amino acid act as the acid. जो भी मॉलिक्यूल प्रोटॉन को डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है. यानी COH ग्रुप जो एसिडिक ग्रुप है उसने क्या डोनेट किया, हाइड्रोजन डोनेट किया. सो वो अभी क्या एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज एन एसिड. वेर एज व्हेन इन एसिडिक कंडीशन दैट इज एट एसिडिक पीएच the NH2 group receives the H plus ion. Acidic solution में क्या होता है, NH2 group will receive what? It will receive the proton. And ये proton कौन accept करता है, amino group. So amino group gets converted into what? It gets converted into NH3 plus. So as NH3 have accepted the H plus ion, एक पहली कंडीशन बेसिक कंडीशन में क्या था, COO माइनस ने हाइड्रोजन को डोनेट किया था, यानी वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह. Whereas in the acidic condition what will happen, NH2 group is accepting the H plus ion and as it amino acid is accepting the hydrogen ion, it will behave as a base. Listen very carefully. एसिडिक कंडीशन में अमाइनो एसिड क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है. अमाइनो एसिड का COH ग्रुप इन द एसिडिक कंडीशन donates the proton or it loses the proton. When something loses the proton, it will behave as an acid. Whereas in acidic condition, what happens? The NH2 group, it receives the hydrogen, or you can say amino acid is receiving the hydrogen. So as it is accepting the hydrogen,
the amino acid will behave as a base. Whereas at an intermediate pH, both groups are ionized and molecule exists as a dipolar Zwitter ion. Intermediate pH पे what will happen? It will have both the groups, that is positive as well as negative, and such a molecule is called as a Zwitter ion. So समझ में आया? एसिडिक कंडीशन में अमाइनो एसिड प्रोटॉन को रिसीव करता है, यानी एसिडिक कंडीशन में अमाइनो एसिड इज एक्टिंग एज अ बेस, एंड इन बेसिक कंडीशन व्हाट हैपन्स, अमाइनो एसिड का जो COH ग्रुप है वो हाइड्रोजन को डोनेट करता है. एज अमाइनो एसिड इज डोनेटिंग द हाइड्रोजन, that amino acid will act as the acid. So basic condition में amino acid act as an acid, acidic condition में amino acid act as the base, and at the intermediate pH it will have both the positive and negative charges and it act as the Zwitter ion. So that is regarding the types of the amino acids. Now see students, I told you based on the charges कितने type के amino acid है? 3. One is the non-polar के which do not have the charges. Then polar and neutral, which means polar and uncharged. Neutral बोलो या uncharged बोलो, यानी charges है लेकिन कैसे है? Balanced है. Balanced है यानी equal number of positive and negative charges. And the last one was polar charged. So polar charge में 2 types, polar with negatively charged and polar with the positively charged R group. So students, these are the 20 amino acids with each of their category. So those amino acids which are having non-polar R group are alanine, leucine, valine, isoleucine, methionine, phenylalanine, tryptophan and proline. Those which have the polar and neutral R group, polar यानी charges है, but charges कैसे होते हैं? Balance होते हैं. Balance होते हैं, it means equal number of positive and negative charges, which means what? As a whole molecule कैसा है? Uncharged है. Example is asparagine, cysteine, serine, glutamine, glycine, threonine and tyrosine. Polar with the negatively charged R group. So they are aspartic acid and glutamic acid. And polar with the positively charged R group, examples are arginine, histidine and lysine. So this is the classification of the amino acids on the basis of their R groups. So this was certain information regarding the amino acids. Now we are talking about proteins. What are proteins? We know that proteins are the polymers of the amino acid. यानी बहुत सारे amino acid जब join होते हैं तो protein बनता है. So there must be a linkage between what? There must be a linkage between the 2 amino acids. So when 2 amino acids are linked, it is called as a dipeptide. So ये 2 amino acids है, उसके बीच में linkage होता कैसे है? उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी रिगार्डिंग अ डाइपेप्टाइड. डाई मीन्स 2, पेप्टाइड व्हेन 2 अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड, जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ डाइपेप्टाइड. अ डाइपेप्टाइड इज फॉर्म्ड through the union of 2 similar or dissimilar amino acid molecules. So when 2 same or the dissimilar, when 2 same or you can say 2 different amino acid molecule join, the structure formed is called as a dipeptide. The bond is formed between the COH group of one amino acid and NH2 group of the another amino acid. See, 2 amino acid के बीच में linkage होगा तो डाइपेप्टाइड बनेगा. लिंकेज के लिए दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होना ज़रूरी है. सो एक अमाइनो एसिड का COH ग्रुप, it will join to the NH2 group of the adjacent amino acid. The COH group of one amino acid, it binds to the NH2 group of the another amino acid.
सो ये उनके बीच में का जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड. द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द COH group of one amino acid with the NH2 group of the another amino acid is called as a peptide bond. ये पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है, देर विल बी द रिलीज ऑफ द molecule of a water. At the time of peptide bond formation, a water molecule is released. See students, we will study the formation of the dipeptide. Dipeptide means when two amino acid join. This is one amino acid molecule, this is the another amino acid. ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है. ये अमाइनो एसिड का COH ग्रुप, NH2 ग्रुप, H एंड R ग्रुप. सेम वे ये दूसरे अमाइनो एसिड का COH, NH, H एंड R ग्रुप. नाउ दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा होता है? द COH ग्रुप ऑफ द वन अमाइनो एसिड reacts with the NH2 group of the other amino acid by a release of a water molecule. So COH का जो OH है ना, वो NH का एक हाइड्रोजन निकल कर ये क्या रिलीज हो गया? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ. एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा? बॉन्ड. सी स्टूडेंट्स, द C डबल बॉन्ड O इट रिमेन्स एज इट इज, ये NH एज इट इज रहा, एंड इनके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड. So this bond is called as what? This bond is called as the peptide bond. And what is released? A water molecule is released. बाकी का पूरा structure as it is होता है. So a dipeptide is formed by the union of the two amino acid. A bond is formed between the COH group of one amino acid and NH2 group of the another amino acid by a release of water molecule. वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जहाँ से COH है वहाँ का OH रिमूव होगा एंड NH2 में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा. एंड दिस बॉन्ड, दिस कंप्लीट बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? पेप्टाइड बॉन्ड. सो ये क्या बना? अ डाइपेप्टाइड, क्योंकि इसके अंदर दो ही अमाइनो एसिड है. बट स्टूडेंट, इज इट लाइक दैट कि पूरे प्रोटीन सिर्फ दो ही अमाइनो एसिड के बने? प्रोटीन तो पॉलीमर है, सो देर विल बी प्रेजेंस ऑफ मेनी अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. सो जब ये प्रोटीन बनता है ना, से फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन का थोड़ा सा पार्ट है. सो यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि ये एक साइड पे NH2 ग्रुप फ्री है एंड एक साइड पे COH ग्रुप फ्री है. सो जो साइड पे NH2 ग्रुप फ्री है दैट इज कॉल्ड एज अमाइनो टर्मिनल और N टर्मिनल, एंड जो साइड पे COH ग्रुप फ्री है उसको बोलते हैं C टर्मिनल और कार्बोक्सी टर्मिनल. नाउ पॉलीपेप्टाइड. So when many molecules of amino acid become bound, a polypeptide chain is formed. So what is polypeptide? Poly means many. So when many amino acids are linked, it is called as the polypeptide. Now, when we talk about a protein, it may have one or more polypeptide chain. प्रोटीन एक ही पॉलीपेप्टाइड की भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी पॉलीपेप्टाइड चेन उसमें हो सकती है. One end of every polypeptide chain is called amino terminal or N terminal, which has a free amino group. Listen very carefully. One end, अभी हमने देखा पीछे in the last slide I explained you कि से here ये एंड का ये NH2 ग्रुप कैसा है? फ्री है. ये पूरा जब प्रोटीन का अमाइनो एसिड का चेन बनेगा तो एक एंड पे NH2 ग्रुप फ्री होगा और एक एंड पे COH ग्रुप फ्री होगा. जो एंड पे NH2 ग्रुप फ्री है इट इज़ कॉल्ड एज द एमाइनो टर्मिनल और N टर्मिनल, एंड जो एंड पे COH ग्रुप फ्री है दैट इज कॉल्ड एज C टर्मिनल और द कार्बोक्सी टर्मिनल. The other end with its free carboxyl group is called carboxy terminal और C terminal. सी ये पॉलीपेप्टाइड है कि जहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन हो गए हैं. यहाँ का COH ग्रुप फ्री है एंड यहाँ का NH2 ग्रुप फ्री है. सो दिस इज कॉल्ड एज N टर्मिनल एंड दिस इज कॉल्ड एज द C टर्मिनल. सो दैट इज रिगार्डिंग द general explanation regarding
the proteins or you can say regarding the polypeptides. Now proteins, what are proteins? They are polypeptides. Poly means many. So when many amino acids are linked together, it is called as a polypeptide. They are linear chains of amino acid linked by peptide bond. Very, very, very important, student. Proteins are the linear chains of the amino acid. एक के बाद एक के बाद एक के बाद amino acids join होते हैं. And the linkage between the amino acid is called as what? Peptide bond. Each protein is a polymer of amino acid, right? As there are 20 types of amino acids, a protein is a heteropolymer and not a homopolymer. कोई भी पॉलीमर अगर एक ही मॉलिक्यूल का बना है, एक ही मॉलिक्यूल रिपीट होता रहता है, तो उसको होमोपॉलीमर बोलते हैं. होमो यानी सेम मोनोमेरिक यूनिट से अगर कोई भी पॉलीमर बनता है, इसको होमोपॉलीमर बोलेंगे. लेकिन जो प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स में अप्रॉक्सीमेटली 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड है. क्या एक प्रोटीन मॉलिक्यूल एक ही टाइप के अमाइनो एसिड का बना है? नो. A protein molecule is formed of 20 different kinds of the amino acid. So a protein is called as what? It is called as a heteropolymer and not a homopolymer. A homopolymer has only one type of a monomer repeating n number of times. होमोपॉलीमर में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, it will have only a same or it will have only a one monomeric unit which is repeated n number of times. But जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, so it is made up of 20 different kinds of amino acid and hence it is not a homopolymer but it is a heteropolymer. Now ये जो अमाइनो एसिड्स है, उसका एक दूसरा कैटेगराइजेशन भी है. दैट कैटेगराइजेशन इज कॉल्ड एज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. सो व्हाट आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? Out of the 20 amino acids which are required in the formation of the protein, there are 7 such amino acids जो अपनी बॉडी को डाइट से मिलेंगे, यानी कि फूड से मिलेंगे. दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी. आउट ऑफ द 20 amino acids, there are 7 amino acids which are supplied through our diet, which are supplied through our food. They are not synthesized by our body. So these 7 amino acids which are not synthesized by our body and are supplied or obtained through diet are called as the essential amino acids. And जो amino acids अपनी body में synthesize होते हैं, they are called as the non-essential amino acids. यानी उसकी need बाहर से फूड के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी बॉडी खुद ही वो अमाइनो एसिड्स को बना रही है. So certain amino acids are essential for health and have to be supplied through our diet. Leucine, isoleucine, lysine, methionine, phenylalanine, tryptophan and valine. ये जो अमाइनो एसिड्स है, ये अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं. दे आर ऑब्टेन थ्रू डाइट. अभी डाइट में वो कहाँ से आएंगे? डाइट में अमाइनो एसिड कहाँ से आएंगे? प्रोटीन्स. यानी अपने डाइट में प्रोटीन्स का इनटेक होगा तो अपने को ये अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन होगा. Hence dietary proteins are the source of the essential amino acids. So therefore amino acids can be essential or non-essential. The latter, that is non-essential, are those which our body can make while we get the essential amino acids through our diet or food. So essential amino acids are those amino acids which we get through our diet or food, and non-essential amino acids are those amino acids which our body can synthesize or make. Now students, the functions of proteins. The proteins, they carry out many functions in living organism.
सम ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो लिपिड बाइलेयर अलोंग विद द प्रोटीन्स. सो ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं. सम फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म. से फॉर एग्जाम्पल अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती है जो अपने को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है. ये जो एंटीबॉडीज़ है वो क्या है? प्रोटीन्स है. सम आर हॉर्मोन्स. से फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं उनका केमिकल नेचर क्या होता है? प्रोटीन होता है. सम आर एंजाइम्स. मैक्सिमम अपनी एंजाइम्स का जो केमिकल नेचर है वो क्या है? प्रोटीन का है. एक्सेप्शन है जो हम बाद में एंजाइम्स देखेंगे तब क्लियर होगा, but most of the enzymes are protein in nature. So these are some of the functions of the proteins. They act as transporters, they fight against the infectious organisms, they act as hormone, they act as enzymes, etc. Collagen is the most abundant protein in the animal world. So animals में जो maximum protein होता है that is collagen. Whereas जो ribulose biphosphate carboxylase oxygenase, the name is ribulose biphosphate carboxylase oxygenase. Basically ये enzyme का name है whose short form is Rubisco. So ये जो Rubisco enzyme है, it is the most abundant protein in the whole biosphere. बेसिकली ये रूबिस्को ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलती है. सो पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन अवेलेबल है दैट इज़ द रूबिस्को एंजाइम. एंड एनिमल्स में जो हाईएस्ट अमाउंट में प्रोटीन है दैट इज़ द कोलाजन प्रोटीन्स. हियर इज़ अ टेबल गिवन टू यू. the name of the proteins and their functions are given. Say for example collagen. So it is a intercellular ground substance. Inter inside. So cell के अंदर एक important component है that is collagen. Okay. अपनी सेल के अंदर डिफरेंट फाइबर्स होते हैं. सो उसमें हमने देखा था कोलाजन फाइबर्स. टिश्यूज जब स्टडी किए सो टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स. सो आपने बोन्स है, टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, ये सब में देखा कि फाइबर्स होते हैं. Trypsin is an enzyme playing the important role in the protein digestion. Insulin is a hormone which is required for the maintenance of the blood sugar level. So it is a hormone जिसका chemical nature क्या है? प्रोटीन है. Antibody, they are the protein which fight against the infectious agent. Okay. Then a receptor molecule. से फॉर एग्जाम्पल सेंसरी रिसेप्शन. अपनी बॉडी में जो भी सेंसेशंस होते हैं, जो भी सेंसेस होते हैं, उसके लिए सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं. एंड ये जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके केमिकल नेचर क्या होता है? प्रोटीन्स. से फॉर एग्जाम्पल स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा. एंड अनदर वन इज द GLUT4. इट्स फुल फॉर्म इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4. What is its full form? Its full form is glucose transporter type 4. It enables the glucose transport into the cell. It helps the cell to take in the glucose inside the cell. So these are the various types of proteins with their certain functions. Let us study the importance of protein. वही है importance बोलो या functions बोलो. So they are the major structural component of the membranes of organelles as well as they are also the chief constituent of the protoplasm. कोई भी membrane है उसमें एक प्रोटीन होता ही होता है and protoplasm का जो main component है वो कौन है? Proteins. All enzymes. Enzymes are the chemicals which maintains the rate of reactions. They are made up of protein. Exception है जो हम enzymes topic study करेंगे तब देखेंगे. Most hormones of pancreas, pituitary and parathyroid glands are peptide in nature. So hormones, maximum hormones का भी आप अगर chemical nature देखा जाओगे तो they are protein or peptide in nature. Actin and myosin which are present in muscle and globular proteins which are present in cilia and flagella जो contractile nature में है and locomotion के लिए responsible है. So
actin and myosin which are present in the muscle and the globulin muscle of the cilia and flagella. All these are contractile protein, contractions karte hai, and these all are responsible for the movement. Immunoglobulin जिसका another name है antibodies. So antibodies which are present in blood plasma, they have the property of immunity. They protect us from the infectious diseases. Melanin, it is a protein which imparts the color to the body. The skin color is due to the presence of the melanin pigment जिसका chemical nature protein है. Now there are certain proteins which becomes associated with the materials other than amino acid. So there are certain proteins which get associated with the component other than the amino acid. Amino acid के अलावा वो दूसरे component के साथ भी join होते हैं. Such proteins are called as the conjugated protein. Example is hemoglobin. Hemoglobin में यानी प्रोटीन along with a non protein part. प्रोटीन में प्रोटीन पार्ट कौन सा होता है? अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड के अलावा भी दूसरा कंपोनेंट होता है. सो सच प्रोटीन्स के जिसमें प्रोटीन पार्ट के अलावा नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी होते हैं, सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. एग्जाम्पल इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है एंड हीम इज द नॉन प्रोटीन पार्ट जो Fe2+ आयन है. ओके, इट इज आयन, IRON. ओके, सो ये हीमोग्लोबिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी. एंड क्लोरोफिल which is required for the process of photosynthesis, उसके पास भी प्रोटीन पार्ट के अलावा Mg2+ आयन है. So these are the certain importance of the proteins. Now the last topic related to proteins is the structure of the proteins. So we will study in detail the structure of the proteins. Proteins are heteropolymers containing the strings of amino acids. What are proteins? They are the polymers of amino acid. यानी बहुत सारे amino acids जब link होते हैं तो एक protein बनता है. Structure of molecules means different things in different contexts. In inorganic chemistry, the structure invariably refers to the molecular formula. So जब हम inorganic chemistry की बात करते हैं तो structure का meaning क्या होता है? Molecular formula. Whereas the organic chemist writes the two-dimensional view of the molecules while representing the structure of the molecules. Whereas the physicist, they conjure up the three-dimensional view of the molecular structures, while the biologists, they describe the proteins at the 4 levels. So which are we being a biology students, we are studying regarding the structure of the protein at the 4 levels. So which are the those 4 levels of the protein? So the first level is the primary structure of the protein. Primary structure is nothing but it is the linear chain of the amino acid. What is primary structure? It is nothing but it is a linear chain of the amino acid molecule. So the linear sequence of amino acid units is called as the primary structure. अभी आप ये सोचो कि एक प्रोटीन में तो बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होके, सो इज इट पॉसिबल कि एक सेल इज़ अ वेरी माइन्यूट सेल, वो सेल में इतना बड़ा चेन अकोमोडेट हो सकता है? नहीं. सो इट रिक्वायर्स द कॉइलिंग. सो कॉइलिंग वाला पार्ट इज सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. ये जो लीनियर सीक्वेंस एक बार प्रोटीन बन जाता है तो ये जो चेन बनती है अमाइनो एसिड की, दैट लीनियर चेन और लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स, दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन, which is the first amino acid, which is second, and so on, is called as the primary structure of a protein. A protein is imagined as a line, the left end represented by the first amino acid and the right end represented by the last amino acid. The first amino acid is also called as N-terminal amino acid. The last is also called as the C-terminal amino acid.
क्योंकि फर्स्ट का COH ग्रुप एंड सेकंड अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप. सो जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप कैसा रहेगा, फ्री रहेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज N टर्मिनल. एंड जो लास्ट अमाइनो एसिड है उसका COH ग्रुप फ्री रहेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज द C टर्मिनल. So here you can see this is a primary structure. It is a linear chain of the amino acids. Okay. Now the secondary structure of the protein. A protein does not exist throughout as an extended rigid rod. ये ऐसा extended rod की तरह it is not possible to get it accommodated. The thread is folded in the form of helix which is similar to the revolving staircase. So ये thread जो बनी है, ये जो linear chain बनी है उसको fold होना ज़रूरी है. So basically ये जो folding होता है वो कौन से form में होता है, helix के form में. Helix is nothing but it is a structure like a revolving staircase. Of course only some portions of the protein threads are arranged in the form of helix. Only some part of the protein gets arranged in the form of the helix. Here only right-handed helices are formed. These are called, ये right hand पे turn होता है and ये turning कहाँ पे है, left. So जब proteins की बात होती है तो right hand helix are only found in the proteins. So other regions of the protein thread are folded into a forms which is called as the secondary structure. यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर होगा secondary structure. So a polypeptide chain is often coiled into a regular spiral called as alpha helix to have a 3-dimensional form. आप देख रहे सकते हो कि folding यही side पे हुआ है, this side. Okay. The helical structure is maintained by a series of regularly spaced intramolecular hydrogen bond. अभी ये helix है तो जहाँ पे टर्न होता है वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होना ज़रूरी है, अदरवाइज द हेलिक्स विल ब्रेक. सो यहाँ पे इंट्रा दैट इज इनसाइड, ये प्रोटीन के अंदर ही दूसरे बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं विच आर कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्ड. सो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे बनता है, इट इज़ फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड्स इन द सक्सेसिव टर्न्स ऑफ स्पाइरल. देखो ये एक टर्न है, यहाँ पे ये बॉन्ड बना है. सो देखो कहाँ पे बना, C डबल बॉन्ड O ग्रुप एंड NH ग्रुप, ये दोनों के बीच में क्या बना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना. नाउ ये जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो एक दूसरा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. सो दैट इज 2 or more polypeptide chain may join together by intramolecular hydrogen bonds and may bend into parallel folds to form the beta pleated sheet. अभी कोई प्रोटीन ऐसे है कि जिसमें मोर देन 1 अमाइनो एसिड्स होते हैं, सॉरी मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है. सो इन सच केसेस व्हाट विल हैपन, ये दिस इज़ 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस इज़ अ सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन. यहाँ पे क्या होता है, इट विल फॉर्म अ बीटा, ये शीट जैसी बनेगी. व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म अ शीट लाइक स्ट्रक्चर. नाउ स्टूडेंट्स ये शीट में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दिस शीट इज कॉल्ड एज अ बीटा प्लेटेड शीट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर देयर आर 2 थिंग्स, आइदर इट विल बी अ अल्फा हेलिक्स or it may be a beta pleated sheet. Now the tertiary structure of the protein. A long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball, giving rise to a tertiary structure. Okay, अभी helical stage में भी पूरा accept होना possible नहीं है, तो ये प्रोटीन अपने खुद भी it will fold upon itself and it will form a woolen ball like structure. And this structure is called as a tertiary structure. You might have seen the woolen ball. So उसका जैसा structure होता है, that is a tertiary structure of a protein. It gives a 3-dimensional view of protein. The helical polypeptide molecule may fold on itself and assume a complex but specific form, either a spherical or rod-like form or any form in between this. यानी रॉड शेप में कन्वर्ट होगा या स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट होगा
या ये दोनों के बीच में का कोई भी शेप एक अज्यूम कर लेगा. These geometrical shapes are called as the tertiary structure. Tertiary structure is absolutely necessary for many biological activities of protein. So proteins की अगर कोई भी एक function करना है, then that protein should be in the tertiary form. And lastly is the quaternary structure of the protein. So quaternary structure किसके लिए important है कि जो proteins कि जिसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हैं, then they will have the quaternary structure. Some proteins are assembly of more than one polypeptide or subunits. The manner in which these individual folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other, that is in linear strings of spheres arranged upon one another in the form of cube or plate, etc., is the architecture of the protein, otherwise called as the quaternary structure of the protein. Say for example, ऐसा प्रोटीन है कि जिसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन है. सो यहाँ पे क्या होता है कि ये इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन के टर्शरी स्ट्रक्चर तक तो बन ही गया होगा. नाउ ये जो इंडिविजुअल टर्शरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन होते हैं, इनको असेंबल करना ज़रूरी है. दैट इज कॉल्ड एज द टर्शरी स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल, ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज अ सेट ऑफ 4 subunits. 2 of these are identical to each other. Hence, 2 subunits are of alpha types and 2 subunits are of beta type, which constitute the human hemoglobin is made up of 4 polypeptide chain. ये 4 polypeptide chain में से 2 are called as alpha chain and 2 are called as beta chain. Now see here it will be more clear. ये बीटा चेन है, ये भी बीटा चेन है, ये अल्फा चेन है, ये अल्फा चेन है. तो आप देख सकते हो कि ये बीटा चेन का खुद का टर्शरी स्ट्रक्चर है. ये देखो स्फेरिकल ग्लोब्यूलर फॉर्म, ये भी ग्लोब्यूलर फॉर्म. अल्फा चेन का भी ग्लोब्यूलर फॉर्म है, इसका भी ग्लोब्यूलर फॉर्म है, यानी ये टर्शरी स्ट्रक्चर में है. नाउ ये ऑल दीज 4 चेन्स दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड इट फॉर्म वन सिंगल प्रोटीन. That is called as the quaternary protein. So that is regarding the structure of the protein. Here you can see this is a linear chain of the amino acid, which is a primary structure. In the secondary structure, this linear chain either forms the helical structure, or if there are more than one polypeptide, it will form a beta pleated sheet. Then there is a tertiary structure कि जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो फर्दर फोल्डिंग होता है एंड इट एज्यूम्स व्हाट आइदर ग्लोब्यूलर और स्फेरिकल और रॉड लाइक फॉर्म. एंड ये जब फर्दर कॉइलिंग होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं, एक्सेट्रा. एंड फाइनल इज द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर वेयर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स विल जॉइन. एंड इन दिस डायग्राम अ फिगर इज शोन कि जहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है. सी दिस इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट इज़ अ कॉइलिंग, अल्फा हेलिक्स इज फॉर्म एंड टर्न्स आर फॉर्म टूवर्ड्स द राइट साइड. एंड इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर इट इज़ फॉर्मिंग आइदर ग्लोब्यूलर. सो यहाँ पे एक स्फेरिकल फर्दर कॉइलिंग हो रहा है. So that is regarding the structure of the proteins. So in today's lecture we have studied in detail regarding the proteins. I end my lecture here, students. In the next lecture we will be studying regarding some another biomolecule. Thank you, students.